दरमियान सेक्शन फाइनाइट डिफरेंस एंड न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन बीटेक थर्ड सेम फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम आज फाइनाइट डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फाइनाइट डिफरेंस एंड न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन में तो फर्स्ट स्टेप है कि जो इसका जो टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंट इंटरपोलेशन क्या होता है? डिफरेंस इंटरपोलेशन दी technical or method of estimating canon value of from a given set of observation is know that as interpolation. Mathematical let x is equal to a, x is equal to a plus h, a plus 2h and so on, and y is equal to function of f is equal to function a plus h, a plus 2h and a plus nh. Then the method of finding function of n for x is equal to n, where m lie in the range a and b plus nh. This is a interpolation. एक छोटा सा एग्जाम्पल, x is equal to 0, 5, 10, 15, 20. Y is equal to function of x 7, 11, 19, 23 and 27. Then the method of finding function of 3, function of 17 and function of 7 with help of the given data. It is known as interpolation, and that of finding f22 or f minus 0.5 is known as extrapolation. इंटीग्रेशन में अब मेथड, तो सेकंड पॉइंट है अपना मेथड्स फॉर interpolation.
फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ ग्राफ, सेकेंड मेथड है द मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, और थर्ड मेथड है यूज ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट differentiation. Finite differentiation. In numerical analysis, we always use the finite differentiation कैलकुलस, क्योंकि हम डिस्कशन जो मेथड से कर रहे हैं, डिस्कशन टॉपिक से कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस ही है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम ओनली मेथड्स यूज करेंगे फाइनाइट डिफरेंट कैलकुलस। तो फर्स्ट मेथड हुआ आपका, अब हम इसका मेथड्स को यूज करते हैं फाइनाइट डिफरेंट calculus. Let y is equal to function of x be a function of equal space of the independent variables x. Let x is equal to a plus h, a plus 2h, and so on. Then the corresponding value of y function of x are function of a, function of a plus h, function of a plus 2h, and so on. Then the difference f a plus h minus function of a is known as the first differentiation of the function fx at x is equal to a, and is denoted by del function of a. Similarly, function of a plus 2h, function of a h is called the first differentiation at the point x is equal to a plus h, and is denoted by function of a plus
h, and so on. Again, del function of a plus h minus function of a minus del function of a is known as the second differentiation of the function of x at the point x is equal to a, and denoted by del square function of a. Here del square does not represent the square of quantity, but it indicates the repetition of the operation del. That is del function of a is equal to function of a plus h minus function of a. Del square function of a is equal to del function of a plus h minus del function of a, and so on. Del n function of a is equal to del n minus 1 function a plus h minus del n minus 1 function of a. The operator del is known as forward differentiation operator for a given फंक्शन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे इसके फंडामेंटल्स थ्योरम पर और आगे अदर्स डिस्कशन पर. थैंक्स. है जब हम ऑपरेटिंग डिफरेंट ऑपरेशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट एक थ्योरम है जिसको हम डिस्कशन करते हैं. थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंशिएशन कैलकुलस. क्या थ्योरम है? इसे प्रूफ नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन सिंपल वे में हम याद रखनी होगी. इफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज ए polynomial of nth degree in x,
then the nth differentiation of function fx is constant. That is, del n function of fx is equal to factorial n a की power n h की power n, constant value. And del n plus 1 function of fx always 0.